अस्सलाम वालेकुम। हम रोजाना 7:30 बजे सुबह और 8:30 बजे शाम पाकिस्तान टाइम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान में पाक इस्लाम फिर कायम होने के लिए। पाकिस्तान का मतलब है अ, पाक इस्लाम का मतलब है मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, इखलाक, रहमत, माफी, हमेशा अल्लाह सुब्हान व तआला को याद करना और दूसरों की खिदमत में लगा रहना और जिक्र करते ही रहना 24 घंटे, हमेशा अल्लाह पाक का नाम लेते रहना। इसी पाक इस्लाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले मदीना मुनव्वर मदीना मुनव्वरा में कायम किया और उसी पाक इस्लाम को इंशाल्लाह अभी ही मदीना इसानी पाकिस्तान में फिर कायम किया जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हम रोजाना ये जिक्र कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं आ, पूरी दुनिया में आलमगीर अमन कायम होने के लिए भी, लेकिन खासकर पाकिस्तान में इंसाफ और सच्चाई इखलाक कायम होने के लिए। और हम खासकर इमरान खान साहिब और उसकी बेगम और उस्ताद बुशरा बीवी जी के लिए भी ये जिक्र कर रहे हैं। तो हम 5 जबानों में जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह जिसका मतलब है मालिक खुदा, और इमैनुअल जिसका मतलब है अल्लाह पाक हमारे साथ हैं, गॉड विद अस, और अदोनाई जिसका मतलब है अ, मालिक वो जो है, जो वो है, ही आई एम दैट आई एम, ये अदोनाई का मतलब है। और अ, राम राम का मतलब है अल्लाह पाक जो हमेशा खुश रहता है और हमेशा खुशी सबको देता है। और एक ओमकार जिसका मतलब है एक ही मालिक है, सब चीजों का सर चश्मा एक ही है। तो इन 5 नामों से हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाह 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 Emmanuel, 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 Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. 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 Adonai, 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 Adonai. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram,
राम 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 एक ओंकार 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 अल्हम्दुलिल्लाह। रुबीना जी, आप उर्दू में दुआ करें पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और खासकर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जी की हिफाजत और उनके सब सच्चे सपोर्टर्स की हिफाजत के लिए और पूरी दुनिया में और सब मज़ाहिब के लोगों में मोहब्बत और अमन कायम हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाकतु अर्शो समात माबूद पाकतु रब्बि सबायूत रब्बि मूसा रब्बि मसीह रब्बि हबीब रब्बि अरबाब। ए अल्लाह, ए आसमानों के रब और जमीन के रब और शहरों के रब, ए हमारे रब, तमाम इंसानों के रब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदियों के रब, हर चीज के रब, दाने और पत्ती को फाड़ने वाले, तौरात इंजील और कुरान को नाज़िल करने वाले, हर शर वाली शय से जिसकी पेशानी आप ही पकड़े हुए हैं, तमाम साफ दिल पाक इस्लाम नजरिया रखने वाले लोगों को आपके पनाह में देती हूँ। पाकिस्तान को भी और इमरान खान को और उनके सबके सपोर्टर्स को और उनकी बेगम बुशरा को और पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में लगे हैं, उनकी हिफाजत फरमा, मदद फरमा, ताकि पाकिस्तान एक सही मायनों में मदीना सानी बन सके। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले मदीना मुनव्वरा में कायम किया, वही ताकि इस्लाम दोबारा यहाँ कायम हो सके। आमीन। तमाम मज़ाहिब के लोग मोहब्बत, तक़वा, सुलह और अमन के साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करें और आपस के खुलाफात दूर करके अल्लाह की इबादत
एक अल्लाह की मोहब्बत के साए में जमा हो जाएं। आमीन। और अल्लाह की इबादत करें। तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान रज़्बिया रखने वालों को जिंदा कौम बना दे। आमीन। गफलत की नींद से जगा दे। हकीकी आज़ादी का शऊर अता कर। आमीन। हम अपने अक़ल, जान और ज़बान से खिदमत खल्क़िल्लाह करें और अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा हासिल करके उसके खास बंदों में शामिल हो जाएं। अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करें जो आप मदीन आसानी के लोगों में चाहते हैं। आमीन। या अल्लाह हमें AyaZoom और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिया पाकिस्तान को फॉलो करने की तौफीक दे। हम सब साथ पाकिस्तानियों को, तमाम आलम इंसानी को माफ कर दें। अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपना फजल हम पर फैला दें। जो लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और हवस से सर और इक़्तिदार के लिए, ताकि उनको रास्ते से हटा दे, ताकि पाकिस्तान मिसाली मदीना आसानी बन सके, जिसको तमाम दुनिया फॉलो कर सके। जिस जिक्र में शामिल अफराद, उनके अहल वयाल और आप आने वाली नस्लों को पाकिस्तान पर कायम करें, अपने खास बंदों में करें। और रब्बाना तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया। हम पढ़ रहे हैं आज सूरह 43 ज़ुखरूफ और 63वीं आयत. We're reading today from the Holy Quran, Surah 43, Gold Adornments, and the 63rd verse. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. When Jesus came with clear signs, he said, "Now I have come to you with wisdom, and in order to make clear to you some of the points on which you dispute. Therefore, fear Allah and obey me." So Hazrat Isa Islam, Jesus, the son of Mary, came with clear signs. He performed many miracles, and he fulfilled many prophecies. He even not only cured the sick, he even raised the dead. So it was very clear to any sincere person that he was a prophet of God, that he was empowered, specially empowered by God. So he explained to them that fear Allah, fear God, and obey me, because he is the messenger of God. He is the prophet of God. He is the teacher, teaching us those things about which we dispute. We have many misunderstandings. This always happens. Humanity, because of the influence of Satan, no doubt, we misunderstand things. We get confused, and then we start disputing with each other about, especially about religious points. We seem to disagree and fight. So the prophet of God comes to clarify our misunderstandings so that we can come together in love. This is the purpose of all religion. This is the purpose of all prophets, to bring people together in love, to clear up their misunderstandings. So inshallah, we can all come together in love with people of all religions and pray together, do zikr together, call on the name, glorify the names of God together. When we are doing zikr, I'm always thinking, I've explained this before, when we're saying Ikomkar, I meditate on the Sikhs and the Muslims and Christians and Hindus also, but especially Sikhs and Muslims in Kartarpur, the place where Baba Nanak Sahib lived the last 18 years of his life and where he passed away. That holy place is a wonderful place for Muslims and Sikhs especially to come together and re-establish pure Pakistan and Khalistan. Khalistan also means land of the pure, just like Pakistan means. So Khalistan and Pakistan will become one when the Muslims and Sikhs together say the names of God. Sikhs already say Allah. That is in the Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikhs, the name Allah is used. So when Sikhs and Muslims come together, Muslims begin saying Ik Omkar, also understanding that's the name of Allah in the Guru Granth Sahib. Then what will happen? I've been told this, I've repeated it often. The people of India, Hindus and all the people of India, they will see, look, these Sikhs and Muslims have been fighting with each other for centuries.
killing each other, hating. Now they've come together in love. We also want that love. We want to be part of that loving community. And this is how world peace will come. This is the victory of Ghazwa Hind. This is how it will come. So this is a wonderful thing for us to understand. And when we are saying Adonai, 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 I always envision the dome of the rock, the beautiful gold dome, and the Masjid al-Aqsa, and I see the Jews and the Muslims there praying together. Allahu, Allahu, Allahu Akbar, and Adonai, Adonai, Baruch Ata Adonai, praying together, Muslims and Jews. That will bring about peace and justice in Palestine, Israel. So this is what we're doing. This is my understanding of what we are doing. So let us continue doing the zikr of the different names of God, because we had some questions about that. Let me just go to that one first, in case. ये क्या जिक्र कर रहे हो, नसीर मरवत पूछ रहा है. तो हम मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो अल्लाह के नाम है उनको हम बोल रहे हैं, उनको हम जिक्र कर रहे हैं, उनके जिक्र हम कर रहे हैं. अच्छा, many questions. Yamnala says, bless, thank you very much. Johnny Chohan says, Baba Nanak said in poetry, Awal Allah noor paya qudrat da sab bandho, ek noor ta sab jag ujaye, kon balaye kon mandha. Meaning, first God, discovered by Noor, all live from Allah, from one Noor. Beautiful. All live from Allah by one Noor. So there's one, first God is discovered by Noor, by light. The Holy Quran also says God is light. All religions teach God is light. But Holy Quran goes on, and God is also a lamp. The light comes from a lamp. So Allah originally is not only a formless light, but Allah subhanahu wa ta'ala also has, like a lamp has form, Allah subhanahu wa ta'ala has form. So thank you, Johnny Chauhan. That's a beautiful verse from Baba Nanak Sahib. And Hornet is sending roses. Nasir Marwat says, oh, I read that. Hornet says, Meri, let's see, let me just read that again. Ye kya zikr kar rahe ho? I want to repeat. These are all names of the same one God. When we say Ram, we don't mean the Prince of Ayodhya by that name. We mean Allah subhanahu wa ta'ala, who is always joyous and giving full joy to everyone else. That is a name of Allah. So these are 5 names of Allah from different religious traditions: Islam, Christianity, Judaism, Hinduism, and Sikhism. The 5 leading monotheistic religions. People are surprised often when I say Hinduism is monotheistic, but it's clear in Hindu scriptures that there's only one God. And Hindus who worship many different gods, they're in ignorance. They're less intelligent. They don't really understand the truth. The other so-called gods, they're not gods. They're servants of God. So there is only one God. That is a clear teaching in Hindu religion. So these are 5 chief monotheistic religions in the world, and therefore we are chanting names of Allah from all 5. Okay. Hornet says, Meri behan ki aankhein खराब हो चुकी हैं, उनके लिए दुआ कीजिए कि वो देख सकें. या मालिक, हॉर्नेट की बहन पर रहम फरमा, उसको रूहानी आंखें दे. ये सबसे जरूरी दुआ है. और अगर तू चाहता है अल्लाह, तो इसके इस दुनिया में इसके आंखों को भी आप ठीक करें इंशाल्लाह, जो उसके फायदे में है. Johnny Jones says, from one nur all creations are, create who wrong, who right. All are right if we worship God by any name. If we surrender to God, we are right. Whatever we call ourselves, whatever religion we identify with as our religion, it doesn't matter. What matters is we surrender to God. That is what Islam means, surrender to God. So Holy Quran says there's only one religion. And if you don't accept that one religion of Islam, you are on the wrong path. That doesn't mean what we usually think it means. That means Islam means surrender to God. Anyone who is surrendered to God of any religion is on the right path. And anyone who doesn't surrender to God, even if he or she calls themselves Muslim and even believes they are Muslim, but if they don't surrender to God, they're not Muslim.
So thank you. We will read one or two more comments. Nasir Marwat says, please samjha to ye kya pad rahe ho. I already answered that. These five names of God, all the same God. And Khan Sartaj says, Allah sab ka muhafiz ko Ameen. Ameen. Summa Ameen. Shukriya. And I'm not going to read all the comments. Nisar Khan says, you made me confused yesterday. Please explain to me what you mean, what confused you. If you explain details, I'll try to clear it up. And I'm skipping over a lot of the comments because our time is short and we are running out of time on our Zoom meeting. But please explain, Nisar Khan says, about making partner to Allah as we see in the world. Well, making partner to Allah means worshiping, or not only worshiping, but like a religious type of worship, but giving our attention to and dedicating our lives to something other than service of Allah. That's making partners with Allah. Not only setting up an idol and worshiping that, but if you make your purpose of life just to make money, then you are worshiping money. As we say, the almighty dollar. People make the dollar their God or the rupiah their God. That is making partners to Allah. Or if you uh, worship some politician as all of your life is only meant to serve them. Or if you worship some movie star or some musician or some hero in one way or another, that is also making partners with Allah. So it's who we give our attention to, not only who we worship with some sort of puja, but whoever we give our time to, who we give our attention to. If we're always thinking about and talking about someone, we're making them our God. So we should always be calling on the name of God, remembering God, studying the teachings that God has given us in all holy books. Uh, so that's my understanding about making partners with Allah. Ruhi Naveed says, Ameen Ya Rabbul Alameen. And again, I'm going to skip some. Johnny Jones says, Allah said in Surah Baqarah, eyes are not blind, hearts are blind. Thank you very much. Yes, very beautiful comment. Uh, it is true. Hazrat Isa alayhi salam, Jesus, he said the same thing. They have eyes, but they see not. So these eyes that we have, uh, seeing with them is not real seeing. Real seeing is with the heart. Beautiful statement from Surah Baqarah. Thank you, Jani Johan. And let's see. Hornet says, आपसे दुआ कीजिए आपसे दुआ के लिए कहा था कि बिछड़े बिछड़े बच्चे अपने वालिदैन से मिल जाएं आपने आ, आपने की उससे अगले ही दिन पाकिस्तान में एक बेटी को रब की जात ने उसके माँ बाप से मिला दिया शुक्रिया yes we should always pray हमेशा हमें दुआ करना चाहिए कि बिछड़े बच्चे अपने वालिदैन से मिल जाएं इसमें बहुत फायदा है बल्कि जो माँ बाप और बच्चे हैं फैमिली जिसको हम कहते हैं खानदान ये इस सोसाइटी की बुनियाद है हकीकी और तरक्की याफ्ता सोसाइटी का मतलब है फैमिली यूनिटी जब माँ बाप और बच्चे दादा दादी नाना नानी और सब मिलते हैं प्यार से शुक्रिया हरनेट जी अच्छा again I will skip some of the comments Yumna Ali says beautiful prayer and thank you and it was very beautiful prayer that Rubina ji said and आपने बहुत प्यारी दुआ की मेरी बहन के लिए शुक्रिया एंड शोएब अनवर सेज हजरत मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह जी कोई रास्ते में इश्क हो अल्लाह जी के रास्ते में इश्क हो या मालिक शोएब अनवर पर रहम फरमा कि अल्लाह जी से इश्क हो
थैंक यू वेरी मच। ये आपके लिए भी, शोएब अनवर साहब, और आप मेरे लिए भी, और हम सब के लिए यही दुआ करते रहे, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, कि अल्लाह के लिए इश्क हो और अल्लाह के सब बंदों के लिए भी इश्क हो। शुक्रिया। Okay, one or two more. Muhammad Zishan Babar says, can you tell me advice that can bring me near to Allah? Do zikr. By far the best advice I can give is do zikr from the depths of your heart. So tears come in your eyes. That is real zikr. When we do that zikr, we come immediately in the presence of Allah, and we are very near to Him and remain near to Him all the time when we do zikr. Allah, Allah, not like a parrot. Parrot can also be taught to say Allahu Allah, but from the depth of the heart, with tears in the eyes, like a child crying for the mother. Allah, Allah. Immediately we are with Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, we will end now. Thank you all so much for joining us, inshallah, every day at this time, 8:30 in the evening Pakistan time and 7:30 in the morning Pakistan time. ये दोनों टाइम इंशाल्लाह हम जिक्र करते रहेंगे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, 7:30 बजे सुबह और 8:30 बजे शाम। अल्लाह हाफिज।